ओके सो लास्ट क्लास में हमने 20 क्वेश्चन तक कर लिया था राइट सो लेट्स स्टार्ट टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन we'll discuss 10 more question here just a minute. The first question is the primary purpose of teaching. तो primary purpose क्या है? Give information, impart knowledge, motivate students, facilitate learning. Obviously answer will be what? Facilitate learning. क्योंकि तो हमें एक ऐसा environment create करना होता है राइट ताकि ये लर्निंग जो प्रोसेस है वो इजीली हो पाए we can engage the students in a means interactive way to make the learning process successful and for that what we have to do we have to facilitate the learning so इसमें हम क्या लगाएंगे डी ठीक है नेक्स्ट मैंने पहले भी बोला था ये हाइपोथेसिस क्या होता है if you go to the options it is very clear that it is a statement that has to be tested तो पहले हमने कंसीडर कर लिया एजम्पशन ले लिया ठीक है अब इस एजम्पशन को हमें प्रूव करना पड़ता है कि इज इट करेक्ट और नॉट ठीक है सो दैट्स व्हाई इट्स a kind of statement that is to be tested just 1 minute huh? You can consider this is a statement that has to be tested. So that can be null also, but हमें उसे test next जो process होगा explanation or some kind of examples we have to test it, right? So this is a tentative exam explanation that can be tested for further investigation. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी ओके नेक्स्ट अभी ये देखो there are different parts from my own experience because I have cracked this examination right so I have cracked more than two three times different type of examination where this is a part जैसे कि UGC का हो गया so from my own experience I can say that there are different sections and from each section you have to actually means respond to this type of question. So in this case, this is a part from the communication, right? So here it is asked that what does it mean by feedback? Feedback क्या है? हम क्या करते हैं? जो communication process होता है, इसमें एक sender है, एक receiver है, right? और बीच में क्या है? Channel है. तो sender से जब मैसेज जाते हैं, receiver response करेंगे, right? तो फीडबैक को हम मान सकते हैं the receiver's response to the sender because if you go through the option अगर आपने ऑप्शन देखा है तो आपको लगेगा कि सारे ऑप्शंस बिल्कुल एक जैसा ही है but you have to choose that one जो ज्यादा करेक्ट है और you can say that about reference to the given statement which is more correct right तो यहाँ पे बी सही लग रहा है क्योंकि अगर आप डेफिनेशन को भी देखोगे तो फीडबैक इज द रिसीवर्स रिएक्शंस टू द मैसेज सेंड बाय द सेंडर सो हेल्पिंग ensure that the communication has been understood correctly communication का मेन पर्पस देखो टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कम्युनिकेशन क्योंकि आप जो पढ़ा रहे हो आप जिसको पढ़ा रहे हो तो वो अगर आपके कम्युनिकेशन आपके लैंग्वेज आपका जो प्रोसेस है जिस वजह से आप पढ़ा रहे हो वही नहीं समझ रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है राइट दैट टीचिंग इज जस्ट इनएक्टिव इट्स नॉट इफेक्टिव सो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है रिसीवर्स का रेस्पॉन्ड so that's why we have chosen the option D. Then one question I am giving it from the logical reasoning part because my last class also I talked about deductive reasoning. Now let's come to the inductive one. ठीक है डिडक्टिव तो हमने बोल लिया था कि स्पेसिफिक से हम जनरल की तरफ मूव कर रहे हैं नाउ इन दिस केस वी वांट टू गो towards the general one right some portions some premises are given from the premises we have to come to some conclusion ठीक है so I have given you the hint right from the hint you can directly choose the answer so B is match here like the premises provide some evidences for the conclusion हमेशा याद रखना ये जो process है induction process है हम conclusion की तरफ जा रहे हैं general अगर in if I say in specific term then we are moving towards up right so this is a kind of generalization process so here you can say it
involves some kind of drawing conclusion based on given evidences, and that evidences are coming from what? The given premises. And it is not necessary that conclusion should be true. Conclusion may be false also, but we have to consider it for our purpose that this conclusion we have to draw from the given premises, right? So answer will be what? B. Then one question from the data interpretation. Pie chart is very simple. I don't think that it is needed to be described here. You can directly take a screenshot. अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे पूछ लेना, ठीक है, बाद में. तो in a given pie chart, if the sector representing 25% of the whole, and what will be the angle? So this is very simple. The angle for a sector representing 25% of a pie chart will be calculated as 25% of 360 डिग्री, क्योंकि पूरा अगर हम कंसीडर करेंगे तो क्या होगा? 360 डिग्री है. 360 डिग्री का हम 25% लेंगे तो क्या होगा? ऑफ कोर्स 90 डिग्री. तो आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा सी. नेक्स्ट हम देखते हैं which of the following devices is used for input. तो इसमें आप क्या बात ही करें हम, ठीक है, हम कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, क्योंकि ये पेपर आपका सभी स्ट्रीम के लिए है. तो some questions you may seem very easy. So this is a kind of input device. Now let's come to the next portion. The next question is the term biodiversity. तो biodiversity क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी ऑप्शन एम में क्या दिया हुआ है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. तो ये सेकंड में क्लाइमेट चेंज हो ही नहीं सकता. ओनली एंडेंजर्ड स्पेसिस ये भी नहीं हो सकता. केमिकल पोल्यूटेंट्स तो डायरेक्टली कैंसर. तो ये आप ऑप्शन को विड्रॉ करके भी, ऑप्शन को कट आउट करके भी करेक्ट ऑप्शन में आ सकते हो. तो बायोडाइवर्सिटी, ठीक है. तो ये क्या होगा? इज अ वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स विद इन अ गिवन इकोसिस्टम, रीजन और द एंटायर प्लेनेट. तो यू कैन से दिस रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. तो दिया गया जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा सही होगा? मैक्सिमम परसेंटेज इसमें जा रहे हैं, ये है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है. हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एकेडमिक पॉलिसीज इन इंडियन हायर एजुकेशन? तो हमेशा याद रखना है, हमारा जो इंडिया यूनिवर्सिटीज है वो दैट ऑब्वियसली कम्स अंडर हायर एजुकेशन एंड दे आर बीइंग रेगुलेटेड बाय यूजीसी. ठीक है. तो सबसे ऊपर जो बोर्ड आ जाता है वो होता है यूजीसी. यूजीसी स्टैंड्स फॉर व्हाट? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. And remember that this is a statutory body. Okay, it is means formed under some act, so that's it. A statutory body. It coordinates, determines, and maintains the standards of higher education in India. Okay, next. ओके, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने 2-3 बार पहले भी बताया हूँ आपको कि व्हाट डज इट मीन बाय ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, राइट? जहाँ आपको डिफरेंट लेवल्स हैं. हम ये मान के नहीं चल सकते कि सारे स्टूडेंट्स हमें जो क्लासरूम में मिलेगा वो सभी के सभी लोग एक्सपर्ट हैं, उस जिसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है. जो हमें ये मान के चलना होगा कि क्लासरूम में कुछ पोर्शन आपका एवरेज है, कुछ पोर्शन बिलो एवरेज है, कुछ पोर्शन दे आर गुड. सो अकॉर्डिंगली हमें जो एकेडमिक डिजाइन है, मतलब कोर्स का डिजाइन हो गया, क्वेश्चन पेपर्स का डिजाइन हो गया, वो लेवल्स को मेंटेन करके चलना है. ठीक है, वी हैव टू इंक्लूड ऑल द लेवल्स. ठीक है. And sometimes it is actually directed that you don't need to include the higher level. सबसे higher level में क्या है? जब आप खुद ही नॉलेज जनरेट कर रहे हो. सबसे बिलो लेवल में आपको कुछ पढ़ाया गया था, उस पर जो चीज है आप थोड़ा सा मेमोरी में रख के डायरेक्ट उससे आंसर कर सकते हो. उसके ऊपर जाओगे तो आप कुछ डिफाइन कर सकते हो. उसके ऊपर जाओगे तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा. लास्ट में आप नॉलेज खुद जनरेट कर रहे हो. तो इसका अगर आप ऑप्शन में आप देखोगे तो ब्लूम टैक्सोनॉमी इज कंसर्न विद व्हाट? ऑप्शन ए में क्या दिया है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट. बी में पर्सनालिटी ट्रेट्स. सी में बिहेवियरल एनालिसिस. डी में इमोशनल इंटेलिजेंस. ऑब्वियसली मैंने क्या वर्ड यूज किया था? आईक्यू. ठीक है. तो ये एक प्रकार का आप बोल सकते हो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ रिलेटेड है. ठीक है. हर एक का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलग अलग हो सकता है.
सो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को हम ये दिए हुए ऑप्शन के साथ अब कंपेयर करेंगे तो आई थिंक दैट ए seems to be better fit. So option should be A. Yes, correct option is A. So we can define Bloom's taxonomy is a framework for categorizing educational goals, focusing on cognitive learning outcomes. लास्ट में और एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि रिसर्च सब्स्टिट्यूट है. अभी मैंने हाइपोथेसिस डिस्कस किया था, तब एक टर्म यूज किया था मैंने, नल हाइपोथेसिस. ठीक है, अब ये क्या है? यू गो थ्रू द ऑप्शन, आई एम डायरेक्टली कमिंग द आंसर. सो ऐसा हाइपोथेसिस, ओके, there is no relationship between the variables being studied and used only as a basis for statistical testing. So जो भी variables, I talk about the variables. There are two variables, dependent variables and independent variables, right? Independent variables के ऊपर डिपेंड करके हम जो वो x y का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं. दैट इज व्हाट एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट, राइट? अब जो हाइपोथेसिस में ऐसा ऐसा होगा कि ये वेरिएबल्स के बीच कोई भी रिलेशनशिप हमें नहीं मिला है, मतलब देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दिस वेरिएबल्स. तो ऐसा अगर हम मान के चल रहा है, ऐसा हाइपोथेसिस कंसीडर कर रहे हैं, तो इस टाइप के हाइपोथेसिस को हम बोलेंगे क्या? नल हाइपोथेसिस. इसको सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं. So you go to the option, then I think that B will be the most suitable one here. So a hypothesis that predicts no effect or no difference. Okay. Okay. Stop. Now I think this is enough for this class. So हम MCQ से ये जितने भी topics हैं, those important topics I'm trying to cover all of them. At least you will be able to crack this paper one, because usually paper one is important for all. Once clearing this, only you can go for the subjective one. So that's it. We'll meet in the next class. Thank you.